Hello class 10 students, how are you all? Hope you all good, safe and healthy at home. I'm your computer teacher Shifa Moga from California Public School. So welcome back to the video series of your chapter number 5, user defined methods or functions. In the last video we have discussed some introduction part of this chapter. We discussed that how to define a method, advantages of a method. So in this video we are going to start with how to construct और component of a method कि method और जो function है उसको आप कैसे बनाओगे, उसको कैसे लिखोगे, उसका declaration या उसका definition कैसे दोगे. So let's start. So in the previous chapter you have learned the construct of a decision making programs, menu driven programs and the programs on loops. In this segment we are going to discuss the construct of a method in a Java programming. In this video we are going to discuss that how to construct a method. What is the another name of the method? That is function. और in that case कि अगर किसी point of time पे I will say functions instead of method, so that is the same thing. Method and functions are the same thing. So the number one component is a header. What is header? It is the first line which contains the access specifier 1, return type 2, method name 3 and a list of parameters. So there are 4 things we define in this header. Number 1, access specifier, return type, method name and the list of parameters. Method header is also referred to as a method prototype or function prototype. With reference to the example, the method header is shown as below. Number 1, so this is the example. What is this? Public. This is the access specifier. Integer is return type. Function आपको किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा? That is integer. Add is your method name or function name and this is called the parameters. There are 2 parameters, m and n. दोनों का टाइप क्या है? integer. और दोनों को सेपरेट कैसे किया है? with the help of comma and enclosed in a parenthesis. So the compiler check the compatibility of the values passed to the method and its receiving parameters during every invocation and report error of mismatch if any. That means आपने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू पास की, आपको रिटर्न भी इंटीजर हो रहा है. सपोज करो आप यहाँ पे इंटीजर देते हो और यहाँ पे फ्लोट देते हो तो मिसमैच हो जाता और इन दैट केस आपको क्या मिल जाता? एरर मिल जाता. So in this yellow line you must note that there is a note here that the method header and method prototype is the same term. In general term, method prototype is used in C or C++ languages, whereas the term method header is specially used in a Java language. Method prototype हम लोग use करते थे. This name we use in C and C++ language, but if we talk about the Java language we use method header. So there it is your method header. So in the method header we have to define 4 things. So after this, second thing is function or a method signature. So signature is basically identification of a person. Similarly, method signature is the identification of a method. What is signature? वैसे अगर मैं जनरल लाइफ में बात करूँ then what is signature? So signature is basically identification. जब आप मेरे signature देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये मैम के signature है. इसी तरह से आप किसी और मैम के signatures देते हो तो you can easily identify that this is the signature of that particular ma'am. उसी तरह से signature आपको क्या बताता है? That is the identification of a method. It signifies a method that is to be invoked for a specific operation और वो operation जो हम invoke करने वाले हैं method Java program में use करने वाले हैं. Why we are using this? Because of some specific operation to be performed.
अ मैथड सिग्नेचर इज़ रिटन बाय यूजिंग द मैथड नेम. अब इसमें कैसे लिख सकते हो? ओनली मैथड नेम एंड पैरामीटर्स, नो स्पेसिफायर, नो रिटर्न टाइप, इसमें कुछ नहीं लेना. द थिंग यू हैव टू टेक इज फंक्शन नेम एंड पैरामीटर ए बी. Clear? So this is how we can define the method signature. So please keep this in your mind. So after that we have a access specifier. What is access specifier? There are 3 access specifiers. It's a public, private and protected. Access specifiers deal with the scope of a usage of a function. Scope बताता है कि function कहाँ use हो सकता है. If it is public, so firstly we define private. So if it is private, a member of only that class can access the function. सिर्फ उसी क्लास के members उस function को access कर सकते हैं. If that function is declared as a private. If it is public, that means कोई दूसरी क्लास के functions पे उसको use कर सकते हैं. And if it is protected, दैट मीन्स इनहेरिटेड क्लास टाइप, मेरी ही क्लास के इनहेरिटेड फंक्शन उसको यूज़ कर सकते हैं. मेरी क्लास के अंदर मैंने उस फंक्शन को प्रोटेक्टेड बनाया, तो मेरी ही क्लास के जो मेरी ही क्लास है उसी के पार्ट्स उसको असेस कर सकते हैं. क्लियर? सो आफ्टर दिस, when no specifier is mentioned, by default Java accept the function to be public. और in case अगर कोई भी ऐसा specifier नहीं है तो उस केस में Java compiler is considered as a public access specifier. So next is return type. So this is the return type. किस तरह की value return करेगा function? It is the data type used before the method name in the method header. For example, this is the return type. It indicates the type of the outcome of the method to be returned to its caller. In case a method doesn't match any value, its return type is mentioned as a void. That is represents a non-returnable method. When a function is defined with return type, the body of the function must return a return statement. और अगर हम लोग void लेते हैं, that means it's nothing. But अगर हम लोग यहाँ पे इंटीजर ले रहे हैं तो it should return a value. Clear? The braces enclosing the value to be returned is optional. This is optional. Each function except with one with return type void returns a value of the specified data type. Next, function name, it's optional. It's truly optional. It is used after the declaration of a return type. So this is optional. आपको suppose we want to calculate the sum of some parameters, 2 parameters a and b. आप sum लिख सकते हो, मैं add लिख सकती हूँ. So it's totally optional and it is totally up to you. आपको क्या name लेना है. After this we have a parameter list. Okay, parameter list, if there is more than one parameter, you have to separate them using commas. After this we have a method block. What is method block? This is the method block. You have to just write the method header. We have 4 things in the method header. Number 1, access specifier. Number 2, return type. Number 3, method name. And number 4 is parameter list. And after that there should be a body of your function. तो body है ये, and there are 3 Java statements in the body. यहाँ से start हो रही है. This is the opening brace and this is the closing brace. Clear? So our next is return statement. Return statement हमने पहले भी बोला है कि अगर कोई function, so this is, let me take this example. This function is meant to return integer type. तो यहाँ पे value को return करवाओगे. ठीक है. So this is how you can do it. Return then value. Return, अब यहाँ पे देखो integer value return कर रहे हैं हम लोग, तो जो आंसर आएगा वो s में जाएगा और s ऑलरेडी किस टाइप का है, integer. दोनों को प्लस किया और वैल्यू को रिटर्न कराएंगे. सो दिस इज़ योर रिटर्न स्टेटमेंट.
So a statement that sends back to the value, result or a outcome from a method to its caller program is known as a return statement. Basically it is used at the end of the function and also referred to as a function terminator. Function के end में use करते हैं and always consider as a function terminator. That means इसके बाद कुछ नहीं है. So after this we have a features of return statement. Number 1, it is used at the end of the method like this. ये end है, यहाँ पे use कर लिया. So it is the exit point of the method. Number 2, no statement in the method block will be executed after the return statement. This is not like this. अब ये एक चीज़ नहीं कर सकती. This is the terminator. यहाँ पे आपको ख़त्म करना है, ये statement allowed नहीं है. So after this, number 3, return statement can only return a single value from the method to its caller. S और P दो values return नहीं हो सकती. So there should be a single value that we want to return. Number 4, a function may have more than one termination points, thus a number of return statement may be included to terminate the method from the different points. आप एक से ज़्यादा भी रिटर्न टाइप ले सकते हो. दिस फंक्शन यहाँ पे दोनों को कंपेयर किया, a इज़ ग्रेटर देन b, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन ट्रू रिटर्न कर दोगे और अगर else है तो भी रिटर्न कर दोगे. सो दैट मीन्स यू कैन यूज़ मोर देन वन रिटर्न स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड. नेक्स्ट, इन केस मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स आर इम्प्लाइड इन अ मेथड, ओनली वन ऑफ देम विल बी एग्जीक्यूटेड टू रिटर्न द कंट्रोल. सो आपको अगर ये चीज़ रिटर्न करनी है तो एट ए टाइम कंट्रोल एक ही के पास होगा. एक टाइम पे रिटर्न एस के पास पहले कंट्रोल होगा एंड आफ्टर द पॉइंट रिटर्न पी के पास होगा. मतलब एक टाइम पे आप दोनों को कंट्रोल नहीं दे सकते, दोनों स्टेटमेंट्स को कंट्रोल कंपाइलर का नहीं मिल सकता, एक टाइम पे एक का ही मिल सकता है. सो वंस कंट्रोल एग्जिट्स फ्रॉम द मेथड, इट कैंट रीअपियर इनटू द मेथड ब्लॉक फॉर एनी फर्दर एग्जीक्यूशन. दैट मीन्स एक पॉइंट पे अगर एग्जिट हो जाता है, कंट्रोल बाहर निकल जाता है फंक्शन से, तो आप वापस उस फंक्शन में कंट्रोल कैसे वापस ला सकते हो? यू हैव टू अगेन कॉल दैट मेथड. क्लियर? सो जस्ट रीड दिस एग्जाम्पल to make it more understandable to you. So class, this is all about today's period. In the next period we will do some more topic of this chapter. So till then, take care, bye and have a good day.